Radhika, you can share the screen. Vinay Kumarji will join in another 30 seconds, it seems. Yeah, host, can you start recording? Okay. Shall we start, Radhika? Vinay Kumarji, can you hear us? Are you here? Yeah, can hear. Yeah. Namaste, Ji. Namaste. So I'll start the webinar. A very good afternoon. A warm welcome to all of you. Thanks for joining us in CGPMT School of Simple Living 29th Simple Talk. First, let me introduce myself. My name is Karthik Burra, an architect, industrial designer, and a volunteer at CGPMT. This session is on simplifying skilling, element earth, and topic is permaculture, self-sufficient and sustainable way of agricultural system. So now I would like to share a brief about CGPMT. Radhika, can you go to next slide? Okay. Previous one, yeah. The Center of Green Building Material and Technology is an Indian non-government organization that was established on April 26, 2004. The trust was founded by architect Neelam Manjunath is a response to a dearth of awareness and human resource for sustainable development and lifestyle to reach sustainable development goals. Our work responds to environmental issues of our times through eco-education, advocacy, research and development, and on-the-ground community projects. Exactly after 16 years, on April 26, 2020, marking our 16th foundation day, CGPMT launched the School of Simple Living as a consolidated effort to engage the common man to work with us to build better world, where the man once again learned to live in harmony with nature. CGPMT has successfully completed 18 years of its existence. We are now taking this one step further with our campaign for 2022 and 23. Simplifying skilling, in which we are drawing this spotlight on efforts for skilling and livelihood generation in the sustainability sector, through which we can secure food, shelter, water, and energy security, improve quality of environment and life, at the same time equip people with skill to be self-sufficient. Recently, we conducted a workshop at CGPMT headquarters as part of our simplifying skilling campaign on the 25th and 26th of June 2022, where the participants had the hands-on experience to construct a strip, arch, mat, and pad foundations and natural fencing with split bamboo, morning glory stems, and wattle and dove fencing. Let's have a glimpse of our previous workshops organized by CGPMT. Yeah, Radhika, you can start. Is the audio on? Yes. Radhika, audio is not, we can't hear the audio properly.
Thank you, Radhika. So it's a very great experience for us. Not only having an hands-on experience, even interacting with artisans, their experience, and also learning from them. So we welcome you all to register for our upcoming workshop on the 30th and 31st of this month on natural building construction. All workshops will be part of CGPMT headquarters construction. Please check and follow our social media and contact us for more details. Now I request our host and CGPMT founder, architect Neelam Manjunath ma'am, to share about today's event with us. Over to you, ma'am. Yeah, I'm sorry, I was just interrupted by another call from somebody. So yeah, Yeah, I extend a very hearty welcome to all of you, and especially to Binayji and his team, um, and all my volunteers and all the people who are watching. The number seems to be a little low right now, and I think it's going to increase with time. We have also put this thing on the YouTube live. This is also going live on the YouTube, so people actually will be, and later also we will be sharing it on YouTube. Some people are, because of now, since the COVID is behind us and everything has opened, the number of people attending webinars, especially on a working day, is slightly less. But I'm very sure, this will be very beneficial to all the people who are here. And I think Karthik has slightly briefly spoken about, CGBMT also, and about the simple talks. We have started these simple talks. Of course, it is not TED Talk, but we are more community driven. So we call it simple talks, Sadharan Baatein in Hindi, where we talk about every person, how we can actually contribute to sustainability and how we can do it at our own pace, at our own space, in our own way, and as per our capacity. And I think that is something which is very important. And I always keep this, putting this word, I do not know, Har Har Mahadev. I don't know how many people know about what is Har Har Mahadev. I did not know till I read some books on it, and I realized Har Har Mahadev actually means that each one of us is a warrior. Each one of us is a Mahadev, means each one of them is a warrior. And this was one slogan given by Shiva in one of the wars. Each one of us is a warrior. So same way in sustainability, if we really have to do something about it, definitely each one of us has to be the warrior, each one of us to be the activist. And keeping that in mind, to simplify this for people, sorry, ma'am. Whoever is may speaking, I? can you mute your mouth? Yeah, thanks. So to simplify this for all of us and people who really want to be sustainable but do not know how, one, and do not know what to do, with this simple talk series, we started in 2020 as a very important part of activities of CGBMT, taking sustainability to your homes, to individual people all across the world. And so here we are with around 29th simple talk. And I'm very happy to have this host this webinar on permaculture from CGBMT, and we have one of a very eminent speaker, Binay ji, and we share the same state. I'm also from Bihar. I'm very happy to be here, that and very close to where, from here where he belongs. So really nice to, I had very good fortune to meet him in our one workshop here in the month of April. He had come to learn working with bamboo with us, constructing with bamboo from us. And we are going to learn today from him about permaculture and how to take care of Mother Earth and soil conservation and many things. I don't want to put any words because I think it's his prerogative to speak about it, because I might be speaking a wrong word or a wrong term. So I also am very happy to be here to understand from Binayji and learn from him. And I'm very sure this will go a long way in placing things forward. We are also in the process of doing our a small, very small campus in Bangalore,
and we would definitely want to employ these principles out there. We have about starting with 2 acres is what we want to do. And I think just now you saw the place in the video where we have started with a small construction work where we are doing the workshops. And there we also propose to do organic farming or permaculture. Now I have to understand from him first, and then we really want to implement this at our place, right? Okay, so with this once again welcome Binay ji. Binay ji, namaste. 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 Yeah, Am I audible and visible? welcome to our forum. Thank you. Hope I am audible and Yeah, visible. Karthik, you can. Yeah, you are audible. You are audible. And I just request to allow Karthik to give us few words about you before you start. Yes. I welcome you to this forum. So Karthik, you can speak about this most humble person, Yes, about ma'am. what he has been doing all this far. Such important. Sure. Yeah. Yeah, thank you, ma'am. So I'm glad to welcome today's speaker, Sri Binay Kumarji. So he's an eminent permaculturist and TED Talk speaker. Since 2007, he's been involved in designing and implementing permaculture principles that converted arid and rock land into a flourishing and full self-sustaining farm in Art of Living Bangalore Ashram. To take Guruji's vision forward, he has educated and inspired thousands of people to work and care for Mother Earth through his talks and live courses. His masterclasses will help you to set your farm and track growing food sustainably without harming nature. His YouTube video, Man in the Bus, brilliantly summarizes his passion, which is not limited to only Mother Earth, but also Gomata and water conservation, integrated with ancient Bharatiya practices, only emphasizes the interdependence of ecology and economy as the only way forward for the humanity. Now, I would like to request Sri Binay Kumarji to share his knowledge and experience with our audience so that we can understand the permaculture and the way it should be done. Yeah, Binay Kumarji, yeah, you can share your screen and you can start. Yeah. Thank you. Yeah. You can remove this screen share. Gurave sarvalokanam vishaje bhavaroginam nidhaye sarvavidyanam dakshinamurtaye namaha. Om namah pranvarthaya शुद्धज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ श्री श्री सद्गुरवे नमः. Yeah. Thank you for having me here. If it is technically possible, so let's all put our camera on that you are blessed with in your phone or laptop, so that it should not appear to me that I'm talking to a wall. And is the English only language to converse with, or we have the option of vernaculars also? You please feel free. अच्छा भारत स्वतंत्र है ठीक है. हिंदी समझ में आती सब लोगों को? हाँ, बहुत बढ़िया. तो so I we'll, think mix कर सकते हैं आप, थोड़ा mix कर देंगे तो I think सबको समझ में आ जाएगा. yes, ठीक है. Yesterday I was conversing with a group of young girls, maybe 100 plus minus, all from the graduation and staying in ashram right now for a week, undergoing some training of leadership and all that. And I was invited कि आप आके थोड़ा उनको
गुड़ गोबर की बातें करो उनसे. And before I started formally, I just said, just tell me what is the most important thing in your life. You have to, if you have to tell one thing, एक ही चीज बोले जो सबसे ज्यादा important है. Among all that available or present, only one said, that to the leader of all that, or maybe the principal of that gang, old lady, that food. Rest everyone said clothes, money, and all that minus food. Everything was in priority. Then I said, okay, what's the time now? They said 3 o'clock, 3 p.m. I said, imagine if you did not have food till now and you are told to be here for another 2 hours or something. What will you do? No, I can't sit this long hungry. Then say, if you don't have money, if you don't have shelter over here, एंड दोज हु सेड कि जिसको पैसा चाहिए, जिंदगी में प्रायोरिटी है, सब कुछ मिल जाएगा, इतने पैसे, इतने कपड़े और 4 फ्लोर की बिल्डिंग, भोजन नहीं होगा, बैठोगे क्या शाम तक? सेड नो. Conversing with them for maybe 45 minutes, what I realized is not even an iota of sensitivity has been put from the side of the parents or the education system in the minds of the young ones कि भाई भोजन जो है ना, भोजन माने भोजन, पानी और हवा. This is the first priority in life, and that shapes your health, and in turn everything gets shaped. Look at this, the future, the generation that is in front of us, the younger ones in the colleges and all that, they hardly look like human beings. All weak, physically weak, they don't know how to speak, कहाँ कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे खाना, कुछ नहीं पता उनको. और उनके कपड़े देखो, उनके मोबाइल देखो, all so fashionable and all that. They do not have any idea that garment industry is the second biggest polluter in this world. Every minute there is one garbage truck load of garment waste gets dumped into the ocean. And that garbage truck is not like, tempo wala size. The US का garbage truck is little, बहुत बड़ा होता है वो. It's in tons. And they also don't know that anything that we buy, within 6 months, 90% of the materials that we buy goes waste. Within 6 months. उनको ये भी नहीं पता. और पता नहीं माँ बाप उनको कहाँ धक्का देते चले जा रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो. Minus, off factor that we call in permaculture world, air, water and earth. Without telling them, awesomeness of the off factor. They are taught, they are, overloaded with information about everything. But this off factor, 3 elements. And that is what is in danger today. Out of 5 elements, आकाश स्थिर है. भले उस वायुमंडल में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन आकाश स्थिर है. आप यहाँ हवन करिए या हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट कर दीजिए, the sky is stable and at peace. Fire still burns. उसकी प्रकृति में कोई दोष नहीं आया है. लेकिन धरती, हवा और पानी, ये 3 चीजें अपनी गुणवत्ता में कमी पा रही हैं हर वक्त. That too because of the effort or wrong effort of human beings. And I think this is what compelled, our Mrs. Manjunath ji and the team, and we at Permaculture Art of Living, or all over the globe, those who want to go green, or different slogans like, she was telling that Vandana Shiva told in last talk, the soil is not oil. How sensitive it is. Soil is not oil, don't burn it. But all over the globe, burning the crops and crop residue, we have made it a fashion. No one wants to talk about it. When we call it an agricultural invention and then scientific, some development kind of thing, we equate it or we add it to the GDP and all that. Talking to the younger generation, I tell you, you will get goosebumps that how ignorant they are. Maybe the ignorance is bliss, but this ignorance is not any more blissful. पैर के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है, हमें पता नहीं, और कोई बताने वाला नहीं उनको. ऊंची आवाज में, with humility and loud voice, कोई बताना नहीं चाह रहा. So all these forums here and there, made all over the globe, are just to tell that, look, when that world is talking about the problems and problems all over the globe, people are busy about talking about problems, seldom talk about solution. Rarely people talk about solution, because solution comes only when you are at peace.
With a peaceful mind comes some nice romantic lyrics, some creative things, some solution comes into a peaceful mind. That is what Gurudev Shri Ravi Shankar has been telling all over the globe last 40, 50 years, that look, be at peace. And peace is directly related to your breath. When you breathe properly, mind gets calmer. And with calmer mind, inventions will be sustainable inventions. So far, we have not seen the sustainable inventions. Any invention by humankind, कोई भी आविष्कार किया हो इंसान ने लास्ट 100-200 साल में, आप देख लो, या तो धरती को खराब किया, या पानी को खराब किया, हवा को खराब किया, और उसमें प्राइड लेते हैं हम। और 50 साल के बाद फिर कहते नहीं, दैट वाज ए रॉन्ग थिंग, यू नो, द डालडा वाज बैड, लेट्स हैव रिफाइंड ऑयल। फिर उसमें भी कहते कुछ गड़बड़ी आ, कहते नहीं, अब ना गाय का घी अच्छा है। गाय का घी पहले अच्छा नहीं था जब घर घर में गाय थी, और अब हर घर में जर्सी आ गई तो गाय का घी अच्छा होने लगा। You know, this is what is science and scientists for you and me. They know the things, but their language is so crooked and tedha meda. They will not talk straight. The educated people, the breeds, they are not used to talking straight. Harsh truth करने की कोई बात ही नहीं करता. And you know, I enjoy talking to the group of these young ones, like, you know, high school वाले हो, college वाले हो, you know, the corporates also. Completely oblivious of the harsh reality of the world कि कहाँ जा रही है दुनिया। घर में एसी लगा लिया मैंने, बाहर भी ठंडा है क्या? नहीं, बाहर ठंडा नहीं है, इसीलिए आपको लगाना पड़ा घर में एसी। You know, so this sustainability is kind of a forum or a practice which talks about the solution of the burning issues all over the globe people are facing. When we we're in the process of developing our permaculture farm, that 6 acre of land, maybe even between, if I get time, I'll show you that 8 minutes ka slide show. You know, it was a small rock, and it was given to the then team, which I was not part of it for first 2-3 months. I was not part of it. I was just new to the ashram, taking care of the gardens in the campus. And when after 2-3 months I was pushed there to go and take care of, you know, these people who have come from some other country and they are doing something over the rock, go and help them. And we documented the things, and our mentor at that time, late Shri Venkatesh Dharmraji, he made a slideshow and sent it to the Earth Institute Australia. I don't know whether that website is working or not. And within 5 minutes they uploaded our the slideshow. And it did not have any, you know, जो नीचे डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो एक लैंग्वेज के साथ लिखते हैं ना, वो कुछ भी तो कहते हैं, कुछ टाइटल्स नहीं था उसमें। उस वक्त उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, 2014 में, 2014 or maybe 2013 December it was, and he didn't write anything. They wrote on behalf of us, given the whole world is talking about the problems, here is the glimpse of solution. If you go this way, then the future generation in this world will have food to eat, water to drink, and air to breathe. And that they kept that slideshow and that small write-up for 3 months on their website. And I checked with Venkatesh, is it normal for them? Are they so what do you say, running short of different articles or something? They said no. He said no. They take a month to decide which project will be published on our website, but they just do it in 5 minutes for us. 5 minutes में चला दिया. That was the kind of solution they could see on this mountain that we worked. And as before coming here, I got late because we were juggling through the photos and all that, कि वहाँ क्या भेजूं, हम क्या भेजें हम। तो पुराने फोटो देख के हमारी नजरें विश्वास नहीं करती कि वही जगह है क्या जहाँ हम आज बैठे हैं। If I successfully show you that it was in 2013-14, it is right now, 99% of the time people will say, no, you are lying. It can't be same place in this 8-9 years. No, हमें भी विश्वास नहीं होता. But slow and steady wins the race. पुराने लोगों ने जो कहा है ना, ऐसे नहीं कहा है. Right way, right approach brings the greenery. And that is what I tell people, कि look, last 2 years, the maximum number of times what we have heard is the oxygen and oxygen cylinder. किसी को ये रियलाइज नहीं हो रहा कि ऑक्सीजन अब धीरे धीरे सिलेंडर में जा रहा है। जैसे 20 साल पहले पानी चला गया, बॉटल में जाना शुरू किया, अब परमानेंटली बॉटल में है पानी। किसी को तकलीफ नहीं है बॉटल का पानी पीने से, तकलीफ होती है जब ओपन सोर्स ऑफ वाटर मिलता है तब। ऐसे ही अभी पता नहीं चल रहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में जा रहा है, आ रहा है वापिस एंड ऑल दैट। अगले 10-20 साल के बाद परमानेंटली सिलेंडर में रुक गया ना,
तो गड़बड़ हो जाएगा। किसका रिफिल करेंगे पहले? And that is where after COVID the enlightenment has come into people. I tell you, lakhs of people have resigned their job in this country and they have not gone to some other job. Like Nutan is one example. If I can say, like her, there are many people top of their career, they resigned and they are going looking for the farms around. But without having, with the lack of proper guidance and proper sustainable practices of agriculture, they make a failure model. रोल मॉडल ऑफ फेल्योर बना लेते हैं वो। वहीं पर दैट इज वेयर वी थॉट कि लेट्स share it with people, whatever we have done so far, what we have experienced. Like yesterday's meeting, I was sharing with the team of Manjunath ji, I have not undergone any permaculture training so far. The experience based learning, that is what I share with people. और ये जो है ना मसल मेमोरी की बात है, खेती बाड़ी जो है ना हाथ से करना पड़ता है। ये किताब में पढ़ के तो बस PhD का पेपर ही लिख पाएंगे, और पौधे लगाने जब पता नहीं जड़ को नीचे डालेंगे कि ऊपर डाल देंगे। If you have heard my TEDx talk, I have shared a story, a live story कि एक बंदा आया मेरे पीछे पड़ा था 2-3 दिन से कि I'm having 30 minutes of time, I'm in ashram, I have driven 40 kilometer one way to meet you, can you teach me organic farming in 30 minutes? 3 days I ignored, 4th day I said, okay, come. He blasted me, what do you think of yourself and all that blah blah. I said, come, आ जाओ। और उसी वक्त 15-20 फार्मर्स भी आए थे फार्म देखने के लिए। सो आई क्लब देम, took them around for maybe 2 hours or something, and at last when I summed up and I was done, I said कि हो गया, अभी कोई प्रश्न है क्या? ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. Do you have any questions? Then this gentleman who was pursuing me for 3-4 days, was an MBA, and he raised his hand. He said, I have a question. I said, tell me. So there was a bottle gourd, a plant of bottle gourd creeper was creeping on a आंवला tree. और वो ब्रीड ऐसा था कि उसकी लौकी जो थी 6-6 फीट की लौकी थी, 5 फीट 6 फीट की लौकी, थिन बट लॉन्ग। दैट इज हाउ द वेराइटी इज, है ना। वो लटक रहे थे 4-5। बोलता है ये लौकी का जो फल लटक रहा है ना, इसका पौधा लगाने के लिए बीज आपने वो पेड़ के ऊपर डाला था या जमीन में डाला था? That was his question. An MBA, 55-year-old more or less, that was his question. मैं तो सर पीट लिया, बोला ये इतना बड़ा पप्पू है, इसका बेटा कितना बड़ा पप्पू, और ये परिवार कैसे चला रहा है भाई, ये जिंदगी जी कैसे लिया? And these kind of life incidences gives you a kind of burning sensation inside कि बहुत जरूरी है ऊंची आवाज में जाके बात करना कि भाई तुम कुछ भी करते होगे, बीज को मिट्टी के अंदर डालना पड़ता है। और जन्म जो है ना, ये एक रहस्य है, मृत्यु एक रहस्य है। बीज को गर्भ की आवश्यकता होती है, और सबसे बड़ा गर्भ जो है वो भूगर्भ है। भूगर्भ में जब बीज को डालते हैं तो धरती अपना काम करती है, and this germination of the seed and the root going following the gravity and shoot going against it is a natural phenomena. उसमें आपका किडनी कुछ नहीं काम कर रहा। Your PhD in agriculture is not doing anything over there. Seed knows that the root has to travel according to the gravity, the shoot has to go against it. That's the intelligence of nature. Yes, isn't it? Am I making you bore or something, guys? बोर होना तो हाथ उठा देना, आवाज तो नहीं। So, and the day the seed germinates, it starts emitting oxygen. Even a sick plant gives oxygen. How is that we got attached to the plants with beauty? अच्छा लगेगा तो रखूंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं रखूंगा। पौधे रहेंगे, they are the second biggest source of oxygen. You might feel that I'm talking something, sharing some wrong data. The first source of oxygen is the water bodies, which got contaminated. The Chola dynasty, they took 450 years to develop or to make water bodies as per Vastu outside every village of that time, right from Iran to Burma to Sri Lanka and Afghanistan, all that. जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे, have you heard सत्यनारायण भगवान की कथा? उस भारतवर्ष में उन्होंने हर गांव के बाहर एक तालाब बनाया। 450 साल लगे उनको। कितने जनरेशन गए होंगे? Look at the planning. And we took 120 years and more than 90% of water bodies are gone. That's our success.
of the, that's our scientific model. And वो water bodies first source of oxygen था, अब वो खत्म हो गया तो trees and plants have become the first source, but they are the second ones. पानी का स्रोत ऑक्सीजन कंज्यूमिंग हो गया, पहले ऑक्सीजन गिविंग था, अब वो ऑक्सीजन कंज्यूमर हो गया, पेड़ पौधे दे रहे हैं, तो पेड़ लगाने से ना ऑक्सीजन आएगा, पहले कोविड ने यही सिखाया। 16 पेड़ का ऑक्सीजन लगता है एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी में सांस लेने के लिए। 3 बैम्बू के पेड़ लगाने चाहिए अपने कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ रहे हैं और हम छोड़ रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। 3 बैम्बू प्लांट्स, बैम्बू हैज बीन ब्रांडेड एज ग्रास, सो यू कैन कट इट एनी टाइम। द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, आज लगाओगे 4 साल में वो काटने लायक हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। दिस ऑल डेटा इज देयर, बट हु विल डू दैट? Canada is having 2,800 trees and plants per head. We also have more or less same number, just those are the numbers. That is per head in India, 28 trees or plants per head in this country, and there it is increasing, here it is decreasing. So what I am trying to tell is that the definition of sustainability has to be explained and taught and shared loud and clear with all the harsh words that you can use, but with humility. Because जमीन में मतलब धरती पर पानी नहीं मिला, धरती की उपज शक्ति में कमी हो गई, तो every Tom, Dick and Harry will be hit equally. Whoever it is, whatever country or creed or gender, whatever it is, it's important. And I just pray that the data that American scientists shared once long back into my email, he said not more than 60 crops we can take from this earth now. And that was कितना, वो 2015 का था, तो अब तो 50-55 क्रॉप ही हम ले पाएंगे. I pray that that is a wrong data. And in this continuation of that line, he shared कि a handful of soil, Rig Veda says that a handful of soil has so many earthworms and microbes and all that in population, which is more than the human population ever existed on this planet. आज तक धरती पर जितने इंसान रहे होंगे उनसे ज्यादा एक मुट्ठी मिट्टी में माइक्रोब्स हैं, जीवाणु कीटाणु। But with wrong practices of agriculture, using a lot of machinery, they are the soil is turning into dirt. And US, the terminology for soil is dirt. धूल है, धूल, धूल में अमृत डालो तो भी कुछ नहीं होगा। धूल is a dead soil. और हम मिट्टी को धूल बनाते जा रहे हैं। From the country of Great Britain, I don't know why they are called great, उनका जो मेजोरिटी ऑफ जो बजट है वो एग्रीकल्चर इन्वेंशन में, यू नो व्हाट दे डू, सबसे ज्यादा उनका जो खर्च है वो नई मशीनरी बनाने में। यू विल बी सी, मस्ट बी सीइंग इन यूट्यूब एंड ऑल दैट कि ऐसे मशीन आते हैं, दे आर लाइक 50 मीटर वाइड। एक बार खेत में घुसते हैं, एग्जिस्टिंग क्रॉप का हार्वेस्ट करते हैं, प्लो करते हैं, पीछे से सीड सोइंग करते हैं, पानी देते हैं, सब करके निकल जाते हैं एक ही बार में। और उनका वजन, ओ माय गॉड, धरती है जो भार वहन कर रही है, बाकी तो सब चौड़े हो जाते हैं, इतना वजन होता है उनका। एंड द एजुकेटेड वंस, द नॉलेज, द वाइज वंस इन आवर वेदास, दे हैव एक्सप्लेन्ड दैट भार वाहन शक्ति जो है ना धरती की बहुत कम होती है, 30 से 50 किलो होती है पर स्क्वायर फीट। और एक ट्रैक्टर जाता है 3.5 टन का इंजन होता है। व्हाट इट इज डूइंग, दैट इज व्हाई दैट फुकुओका एंड all these great people in our country and other countries, they talk about no-tilling farming. But we sitting in the city, we feel नहीं यार खेती बाड़ी तो वो लोग कर लेंगे, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं पैसे कमाता हूँ, खरीद लूंगा, I will buy anything and everything, I am anyway buying, this is what I get in city. यही चीज ना मार रही है लोगों को। 75% of Bangalore is concrete, किसी को पता नहीं चला। हैदराबाद में बाढ़ आ गया, हैव यू हर्ड फ्लड इन हैदराबाद एनी टाइम बिफोर? नो। चेन्नई 1400 mm of rain and it was dry in 2019. The example is in front of us. हमारी नंगी आंखों के सामने सब नाटक हो रहा है, हमें लगता है दुनिया ऐसे ही चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी बाबू। Things are going to be very scary, God forbid, if we don't take corrective measures. So these kind of sessions and forums are in picture. इनका जन्म हमारे जैसे लोगों का जन्म ही हुआ चीखने चिल्लाने के लिए कि भाई धरती को बचाओ, पानी को बचाओ, हवा को बचाओ, बाकी जो मर्जी कर लो। How is that we forgot that we can stay naked but not hungry?
कपड़ों का इन्वेंशन तो बहुत बाद में हुआ, शरीर ढकना बहुत बाद में आया, पहले पेट भरने की कला आई। नदियों के किनारे जानवरों के सहारे हमने भोजन उगाना सीखा, और अभी नदी गायब हो गई। एक बुक का नाम ही है नदी गायब। मैं बीएचयू के एक फोरम पर बात कर रहा था, वो वीडियो भी शायद चढ़ाया हुआ उन लोगों ने। तो वहां पर एक महिला थी, कर्नाटक की महिला है, शी डिड हिंदी पीएचडी इन हिंदी फ्रॉम बीएचयू, एंड शी रोड अ बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसका नाम ही था नदी गायब, माने रिवर्स हैव वैनिश्ड। द टाइटल ऑफ दैट बुक, नॉट ऑफ द पोएम, वाज नदी गायब। कैन यू इमेजिन? लोग कर रहे हैं अपना काम, लेकिन हम दोनों कान में उंगली डाल के फिर कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, सुनाई नहीं देता। We just look for the horizontal distance of the water vendor from our home. If in case we start looking for the vertical distance of the water at our home, तो सारे घर में ताला लगा के लोग जाएंगे नदी को खोजने के लिए। 3000 feet, और कहा था महाराष्ट्र में, आप यूट्यूब में डालना, इफ यू आर ऑन लैपटॉप यू कैन चेक इट राइट अवे, कि लावा कमिंग आउट ऑफ बोरवेल होल। आप अभी चेक करो, 2 या 3 वीडियो आएंगे जहां बोरवेल डाल रहे थे महाराष्ट्र में और उससे लावा निकला। नॉट फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, इट वाज फॉर आवर्स। आधे एकड़ में लावा फैल गया 1100 फीट पर, 1100 फीट। फिर भी ये न्यूज नहीं बना, इट्स नॉट ए ब्रेकिंग न्यूज, इट्स ब्रोकन न्यूज। पानी लेने गए थे, हवा निकल जाती तो भी कोई बात नहीं, आग निकल रहा है। धरती इतनी कुपित है। हु विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस? You know, that is what when we teach our advanced programs, we deal with 6 topics. You know, their water, 5 घंटे हम बात करते हैं पानी के सस्टेनेंस के ऊपर, पानी के संरक्षण के ऊपर, जो RWH करके आए ना टेक्नोलॉजी। हमको लगता है आज ही नया भूत आया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। These people called scientists and writers of agriculture books, they wrote in our high school books कि rain water is the purest form of water. But when we grew up, we became adult, we made the family, went into the job, went to agriculture. The same science is telling कि mine the water. Don't look for the up for the water. किसी ने वो किताब को जलाया नहीं कि तुमने लिख के दिया कि वर्षा का जल सबसे प्योर जल है, सबसे शुद्ध है, तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि माइन द वाटर? एंड माइनिंग द वाटर है जस्ट dried the earth, layer after layer, deeper and deeper and deeper. Oh my God, no one talks about it. और वर्षा का देखो तो कम नहीं हुआ, रेन वाटर कम नहीं हुआ। There is a simple calculation. It's I get ashamed when I read this line that 1000 mm of rain, 1 acre of surface area, 63.9 lakh liter of water in 1 year. Water means rain water. You want me to repeat? 1000 mm of rain, 1 acre of surface area receives 63.9 lakh liter of water. That is almost 64 lakh liter of water. And no matter how many crops you take, even if you take 4 crops, you are not going to need or use more than 20 lakh liter of water. The nature is giving you 3-4 times more than you need. And still you claim that, we are getting, there is no water. असम में एक बोरवेल डालना हो तो 15 लाख रुपए लगते हैं। कर्नाटक में, बैंगलोर में डालना हो तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए लगते हैं। Every year the borewell fails in Karnataka. Every 6 years the borewell fails in India. That's the average. I met a farmer. I'm still in touch with him. 2 strange farmers, educated. One is chartered accountant. One is some engineer. That engineer said कि in 1 acre, sorry, कितना था वो? 1 acre में 43 borewell he put in Vidarbha area in Maharashtra. 43 borewells and all failed. And he was an engineer. He was not some so-called uneducated person. उस आदमी को किसी ने नहीं बताया 43 बोरवेल में। आप सोचो ना, अगर 40,000 भी रुपया लगा होगा, कितना पैसा लगाया बंदे ने, और इतनी अकल नहीं है, एक गड्ढा खोद देता तो इतना पानी हो जाता उसके पास। And then he called me, I saw your video, ye wo. What do I do? I said, get lost. Another person called and he made pond in 2 acres of land. The total area of 16 acre on a hillock, और 2 एकड़ पर उसने पॉन्ड बना दिया। 22 लाख रुपए लगाए। 4 साल हो गए, 4 लीटर पानी भी नहीं आया पॉन्ड में। Because he did not go to a right person who will guide him in pond construction. वो जेसीबी वाले के हिसाब से गया, और जब वो पॉन्ड बना रहा था तो कोई आया, वो प्लास्टिक बेचने वाला, उसको बोला, अरे इतना बड़ा पॉन्ड बना रहे हो तो खेत में पानी कैसे डालोगे, तुम्हारे पास तो वाटर सिस्टम नहीं है, पाइप नहीं। तो उसने पूरे में पाइप लगा दिया पूरे खेत में, जैसे वो सीवेज का लाइन डालता है ना, वैसे पूरे में पाइप लगा दी, ड्रिप लगा दिया,
और यहाँ 2 एकड़ का नदी खोद दी उसने, पानी 1 लीटर भी नहीं। और कितना गहरा किया? 22 फीट गहरा किया, डिफाइंग ऑल द कॉमन अनकॉमन कॉमन सेंस। तुम कूद डूब मरो यार उसी पॉन्ड में, तुम उसके लिए भी पानी नहीं वहां पर। और कहां बनाया पॉन्ड उसने? ऑन टू द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ हिज फार्म। उसमें पानी कहां से आएगा? पानी तो ग्रेविटी फॉलो करता है ना। इतनी अकल नहीं, पर किसने बताया तुमको? नहीं, वो जेसीबी वाले ने और पॉपलिन वाले ने बोला कि जितना गहरा करोगे ना उतना पानी आएगा। वी आर the proud generation who we have lost all these kind of uncommon common sense to save the water, to grow the food. But we say, I'm a white collar, I earn, my package is in millions, I have a very big vehicle, I have a lot of things, but I buy the water, and we are not ashamed of it. I am very ashamed. इसीलिए ये सारी बातों को जोर जोर से बोलने के लिए ना बहरे कान में डालना पड़ेगा, नहीं तो आगे की जनरेशन will going to curse us. You were there, but why don't you shout it out and told that, look, before it gets polluted or depleted, this is the time to take care of it. And I tell you, when this why to do, this awareness quotient is increased in the brains and minds of every fellows, the technical aspect, the how to do is very, very simple. Tell me, is it that tough to grow a seed? I mean, germinate a seed? Seed germinates on its own. The earth is full of fertility even after 60 years of dumping the pesticide and chemicals and whatnot. It is still able to sprout the seed. भू का गर्भ अभी भी सुरक्षित है, अभी भी बीज अंकुरित हो रहा है, संभावना अभी भी है। बट डू वी नो, आवर हैंड्स नो कि हम बीज जब गिरा रहे हैं ना तो सही डिस्टेंस पर गिर रहा है कि नहीं? ये कला है क्या हमारे हाथों में? आर वी जस्ट डिपेंडेंट ऑन सम ऐप, सम मशीनरी, सम इंजीनियरिंग वर्क? इसमें डाल दो और they know, they have specified the distance between 2 गन्ना, 2 गेहूं, 2 मक्का. Why is that? We are depending upon so much on the machinery. That is why the farming is becoming so costlier and costlier and costlier. Whether it is chemical or organic, both are equally costly. Organic के बारे में तो मेरा मुंह ही नहीं खुलवाओ. It's such a big trap. Sucking the money of the farmers. Is the same person who started chemical farming, the green revolution, the same person started organic, what is that, organic foundation in this India, in this country. You Google it. उसी आदमी का क्या? Because scientists are having the vision of 50 years आगे क्या होगा. आप देखो ना, जब भी हाईवे पर आप जाते हो, बैंगलोर से कहीं बाहर जाओ, हाईवे पर दोनों तरफ किसने जमीन खरीद कर रखी है? All the builders. They know that 50 साल के बाद ये 5,000 रुपये एकड़ की जमीन 5 करोड़ होने वाली है. They are visionary. They have hired people. हम और आपको लगता है कि जमीन जो है ना बोझ का काम है, बेचो और बैंगलोर में एक डब्बा खरीद लो. They knew it कि लोगों की मेंटालिटी चेंज होगी जब पेस्टिसाइड से, केमिकल से जब उब जाएंगे, they will go towards non-chemical. So they had the product ready. There are more than 250 companies in this country which are working, which are selling the organic pesticide, organic, all those things which will be used in the farm. And the approach what I use and I share, and there are millions of people like, I'm not the only one from some moon or some Mars. There are millions of people who say that, look, 83% of your expense as a farmer is in pesticide and the seed. 83%. So after investing 100 rupees, you are just earning 70 rupees. अब वो 17 रुपये में बच्ची की शादी, पढ़ाई, बीमारी, all that, is it possible? And अनाज का दाम नहीं बढ़ना चाहिए. अनाज का दाम बढ़ेगा तो सरकार गिर जाएगी. प्याज का दाम बढ़ा तो दिल्ली में 2 सरकार चली गई, शीला दीक्षित और मदन लाल खुराना. प्याज का दाम बढ़ने से गिर गई सरकार है. मोबाइल का दाम हर 6 महीने पे डबल कर दो, कोई हंगामा नहीं होगा. दवाई का दाम बढ़ जाएगा, लेकिन अनाज का दाम नहीं बढ़ना चाहिए इस देश में. और हम बोलते हैं फार्मर्स को इनकम नहीं होता. So what we wanted to share कि once this awareness part is taken care, if you are aware, look, this is the important thing in life. Basis this, there will be everything else coming and growing green. बिना फाउंडेशन के लाइफ चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. गुरुदेव says, deepen your root and broaden your vision. Our life is like a tree. The deeper the root, the stronger is the tree. और जिसका जड़ छोटा होगा ना,
जिसमें जड़ नहीं होता उसको पेड़ नहीं, खूंटा कहते हैं हमारे गांव में, और खूंटा में बकरी बांधते, घोड़े बांध देते या उसके ऊपर छप्पर डाल देते। बिना जड़ के रहोगे, खूंटा बन जाओगे। एंड दिस इज व्हाट आवर कमिंग जनरेशन इज हैपनिंग। आई एम सॉरी बट दिस इज व्हाट इट इज। यूनाइटेड नेशंस का एक डेटा है कि द जनरेशन ऑफ फार्मर्स टुडे आर द लास्ट जनरेशन ऑल ओवर द ग्लोब। इमेजिन इफ देयर आर नो फार्मर्स एंड नो फार्मिंग स्किल। कहां से आएगा भोजन? डाउनलोड करेंगे, कोई ऐप है आपका जो कितना भी महंगा मोबाइल हो, ट्राई करो एक बार ऐसे, रोटी आता है क्या? नहीं आएगा। That is what I did in the IPC when I was invited as a speaker International Permaculture Conference. They asked me to write, a quote about agriculture or permaculture. I was, walking in the farm. I just typed from my mobile something and sent. और जब वहां गया तो 1 हफ्ते का वो सेशन था, वो पूरा IPC था 2018 में हैदराबाद में। I just asked कि dude, you had asked me to send some quote. I want to see all those quotes of 60 countries से करीब 120-130 स्पीकर्स आए थे। I was just one among them. तो वहां सबसे ऊपर जो लिखा था वो था एडिबल्स कैन नॉट बी डाउनलोडेड, यू बेटर ग्रो इट। एंड नीचे मेरा नाम लिखा था, विनय कुमार सिंह। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। एंड दिस फेलो डिडंट नो हु एम आई, सो आई जस्ट आस्क्ड व्हाई डिड यू चूज दैट? ही सेड दिस वन लाइन टॉक्स ऑल। हाउ कन्वीनियंटली वी हैव फॉरगॉटन दिस कि इट इज नॉट गेटिंग डाउनलोडेड। आप जब आश्रम आएंगे हमारे कैंपस में तो एंट्रेंस पर एक सब्जी की दुकान है। हमारा अपना जो 300-400 एकड़ का जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसका जो सरप्लस प्रोड्यूस है, आवर किचन इज द वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट किचन। 100 kg ऑफ सॉल्ट इज कंजम्पशन फॉर अ डे। इन नवरात्रि इट इज 1000 kg पर डे, 10 days 10,000 kg। दैट इज 2019 का डेटा, प्री कोविड। ये साल भी ऐसा होने वाला। तो जो सरप्लस में 200-400 किलो सब्जी आएगी वो दुकान में भेजते हैं। आई वॉज द फर्स्ट शॉपकीपर ओवर देयर इन 2015 और मे बी 16। 3 दिन में मैं भाग गया। 10 तरह की सब्जी रखी है। देयर वाज नो मॉर्चरी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, फ्रिज नहीं था, बाहर ही रखे थे हम, धूप में या छाया में। लोग आएंगे और देखेंगे, 5 मिनट ऐसे देखते रहेंगे उसको और बोलेंगे बेटा चलो, देयर आर नो वेराइटीज हियर। तो मैं पूछा कि मैम व्हाट इज दैट यू आर लुकिंग फॉर? तो सबसे पहले तो उनको ये चमक गया कि ये सब्जी बेचने वाला अंग्रेजी कैसे बोल रहा है। ऐसे देखेंगे, व्हाट? आई सेड यू सेड देयर इज नो वैरायटी, देयर आर 10 वेराइटीज हियर। नो यू डोंट हैव गोभी। तो बोला ऐसा बोलो ना कि गोभी नहीं है। अकल में कीड़े लग गए, सालों भर गोभी खाओगे? दे हैव टू स्प्रे 22 times if the cabbage or cauliflower has to be grown unseasonally. Why is that we have forgotten this कि सारे खाने की चीजों का सीजन होता है। आप उगा नहीं सकते, कोई बात नहीं। आप शहर में रहते हैं, कोई पाप नहीं है, लेकिन जो खरीदते हो उसके बारे में जानो तो सही। मोबाइल खरीदना हो तो इतना रिव्यू देखते हो, भोजन खरीदना हो तो यही मिलता है, यही नहीं मिलता तुम खोजो। यू क्रिएट द डिमांड एंड सप्लाई विल कम, इफ नॉट फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द मून इट विल कम। इट्स ए कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी माय डियर। क्रिएट द राइट काइंड ऑफ डिमांड। मेरी कलर वाला गुड़ पूछो तो चीनी बिकनी बंद हो जाएगी, गुड़ मिलेगा। जैगरी डाइजेस्टिव एंड आयरन्स, लोहा भी चबा जाओगे ना, गुड़ उसको पचा देता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर लैकिंग in this generation, those who are becoming parents, जो बाप को ही नहीं पता, माँ को नहीं पता, बच्चे को खाक पता होगा। And that is where, again, repeatedly I'm telling, these kind of sessions and forums are born out of these kind of, burning experiences to save the planet and to save the common sense which is getting depleted from the brains and heart of people today. And once that awareness quotient is, ignited कि भाई मिट्टी में हाथ डालने से ना हाथ गंदा नहीं होता। हमारा हाथ भगवान का बना हुआ, ये प्लास्टिक से ज्यादा शुद्ध है। हाथ में प्लास्टिक लगा लेते हैं और वो क्या, एक हैंड वॉश आजकल है ना, कोविड के समय में क्या, सैनिटाइजर। खाने के ठीक पहले सैनिटाइज कर लेते हैं हाथ को और फिर खाते। सैनिटाइजर जा रहा है ना मुंह में तो 2 चम्मच अंदर भी डाल के देखिए, अंदर भी सैनिटाइज होता है क्या? हाथ में प्लास्टिक का कवर लगा लिए तो मतलब प्लास्टिक ज्यादा शुद्ध है हमारे हाथ से। ये जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है ना, ये खाली इंडस्ट्री के प्रोड्यूस को बढ़ावा देने की चीज है और कुछ भी नहीं है। ये कल कुछ और प्रोडक्ट आया, आज कुछ और, परसों कुछ और आएगा। दे कीप चेंजिंग। पहले बल्ब था, फिर ट्यूबलाइट आया, फिर पता नहीं क्या आ गया। सारे इंडस्ट्री वाले बर्बाद हो गए, अब जाके CFL है या पता नहीं कुछ और आएगा कल को। ये है इंडस्ट्री, ये है साइंस। But something which never changes in form and shape and size is the farming produce, agriculture, but the grains and vegetables. बदला नहीं अभी तक।
वही अनाज कल भी खाते थे हमारे बाप दादे, आज हम और आप भी खा रहे, कल भी वही खाएंगे, जिस दिन मरेंगे उस दिन भी भोजन खोजेंगे। बदलने की कोशिश में लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हर चीज को बड़ा कर दे रहे हैं, हर चीज को चमकीला कर दे रहे हैं। हमारे अनाज, हमारी चीजें वो भी गायब हो रही हैं। 98% of vegetable seeds, native vegetable seeds have gone depleted from this world. दुनिया से खत्म हो गया 98% सब्जी के, देसी सब्जी के बीज। वेयर आर यू? 1100 ट्रक देशी चावल के बीज जला दिए थे आंध्र प्रदेश में मोनसैंटो ने। 1100 ट्रक, और वो न्यूज नहीं बना। और जब मैं ये शेयर कर रहा था ये चीज ना, पहले मैं कहीं पढ़ा था, तो पढ़ी हुई चीजों पर उतना भरोसा आजकल नहीं कर सकते। आई वॉज शेयरिंग दिस विथ ग्रुप ऑफ 500 पीपल हियर इन आश्रम, ऑल फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मैं बोला देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। मोनसैंटो वाले क्या करते हैं कि किसी भी सबसे शार्प आदमी को गांव में घूम के उसको हायर कर लेते हैं, उसको 40-50 रुपए की नौकरी देते हैं। उसको कहते हैं पूरे गांव में जितने लोग किसान है ना, उनके घर से बीज लेके आना, डबल द कॉस्ट उनको दे दो, प्राइस दे दो, और वो बीज लेके आ जाओ, और वो ले जाके बाहर में जला देते हैं उसको। एक बार आपके घर में बीज नहीं है ना, तो फिर खरीदोगे, यू बाय व्हाट यू डोंट हैव एट होम, राइट? तो मैं ऐसा बोल ही रहा था, एक बंदा हाथ उठाई, और मे बी मस्ट बी इन हिज 40s, लंबा तगड़ा आदमी उठा और रोने लगा। बोला फर्स्ट टाइम आई एम अशेम्ड ऑफ मी बीइंग PhD और MSc इन एग्रीकल्चर, एंड मैं 5 भाई हूं और पांचों ने एग्रीकल्चर में मास्टर्स करा है। वन ऑफ माई ब्रदर इज वर्किंग फॉर मॉन्सेंटो डूइंग द सेम जॉब व्हाट यू हैव टोल्ड। मेरे को गूज़बम्प्स आ जाता है हर बार आई नरेट दिस स्टोरी। बोला मेरे भाई का यही काम है। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट टाउन। ही सेड उस शहर के बाहर जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है उसके बाहर मोनसैंटो की एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का जो ईंधन है, द फ्यूल है, इज द देसी बीज जो वहां से कलेक्ट करके मेरा भाई लाकर वहां जलाया जाता है। किसी के कान पर जू नहीं रेंगती सर, और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, इम्यूनिटी बना लो। अरे खाक, देसी बीज ही नहीं बचेंगे तो इम्यूनिटी कहां से आएगी? तब से एवरी टॉक आई गो, एवरी गेस्ट लेक्चर जहां भी जाते अपने कोर्सेस में, आई शेयर दिस स्टोरी कि लुक देयर आर पीपल वर्किंग ओवर टाइम टू बर्न एवरीथिंग इंडियन ओवर हियर, स्पेशली in terms of seeds and the fertility of the earth, fertility of earth, purity of water and freshness of air। इसको मारने के लिए लोग ओवर टाइम कर रहे हैं। इफ यू हैव टू बी अलाइव एंड हेल्दी, दैट टू हेल्दी लिविंग, आपको इन तीनों चीज की गुणवत्ता बचानी पड़ेगी। स्टार्ट फ्रॉम ए स्मॉल स्केल, एक पॉट से शुरू करो, एक गमले से शुरू करो। एक ही फॉर्मूला है, 2+2 4 इज हियर ऑल्सो, और मून पर भी वही होता है, 2 और 2 4 ही होता है। माने गमले में भी वैसे ही बीज अंकुरित होता है, 100 एकड़ के खेत में भी वैसे ही अंकुरित होता है। फॉर्मूला इज सेम, स्केल इज डिफरेंट। एंड इफ यू हैव फॉरगॉटन बिकॉज ऑफ वॉट एवर culture or practices or education that we had in past, we forgot the art of growing. Go and learn from somewhere, some institution, some farm, some farmer, you go learn it and you learn the art of growing. ये सीखने की चीज है, and that is what we practice, and it's so easy, damn easy, I tell you. The nature of anything biodegradable waste, especially fruits and plants and vegetables and peels and roots and leaves, everything, nature is once they are out from course, जब वो अपने जो उनका लाइफ है, जो शरीर है, पौधा है, उससे जब अलग होते हैं तो वो डिकम्पोज होना शुरू होते हैं। दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। आपको कुछ नहीं करना उसमें, आपको बस पेशेंट रहना, बस धीरज रखिए, वो सड़ जाएगा। और जहां पर भी पौधे सड़ते हैं, सब्जियां सड़ती हैं, वहां पर केंचुए ऑटोमेटिक आते हैं, वो उनका भोजन है। जैसे चूहे मरते हैं तो ऑटोमेटिक व्हाइट वाला फंगस आता है, बदबू चूहे के डेड बॉडी में नहीं होती, वो व्हाइट फंगस में होती है। रोड पे देखो कहीं चूहा मर गया, 10 मिनट आधे घंटे के अंदर फंगस आएगा, उसको पूरा खा जाएगा, चूहा का बॉडी खत्म, वो फंगस गायब। दैट इज द नेचर, द इंजीनियरिंग ऑफ द नेचर, सिस्टम ऑफ द नेचर। तो बायोडिग्रेडेबल चीजें हम इसीलिए कहते हैं कि वो डिग्रेड हो जाती, और वो जब डिग्रेड हो गया उसमें एक बीज डाल दीजिए। आप नहीं डालेंगे तो धरती को जो मर्जी है वो उगा देगा, वो आप उसको वीड कहेंगे। आप अपने लिए कुछ उगाते हैं तो उसको फसल का नाम देते हैं। धरती अपने हिसाब से कुछ उगाती है, आप पहचानते नहीं उसको, तो आप कहते हैं वीड उग गया, तो वीडीसाइड डाल देते हो, है ना। तो अब वहां पर जब आप उसमें बीज डाल देंगे, द फर्टिलिटी इज सो मच, द प्रेजेंस ऑफ अर्थवर्म इज द साइन, द सिम्टम दैट अर्थ इज अमेजिंगली फर्टाइल। आप उसमें एक बीज डाल दीजिए, यू फॉरगेट, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर।
जैसे आपको समय समय पर प्यास लगती है तो पानी पीते हो, वैसे ही जाके जब देखना मिट्टी थोड़ी सूखी लग रही है, उसमें उंगली डाला, थोड़ा सूखा लग रहा है, जस्ट जाके थोड़ा सा पानी दे दो, पीने लायक पानी दे दो। नहाने के लिए पानी नहीं देना पौधों को, पीने के लिए देना। माने क्वांटिटी का ध्यान रखना। नहाने के लिए 20 लीटर लगता है इस शरीर को, पीने के लिए इतने बड़े शरीर में 1 ही गिलास चाहिए एक बार में। पूरे दिन में 3 लीटर 4 लीटर, सब लोग पीते भी नहीं उतना। तो पौधे को कितना चाहिए होगा? वेरी लिटिल एट ए टाइम। कीप इट मॉइस्ट, डोंट फ्लड इट, सिंपल एंड वेट। समय से समय आए तरवर फले के तक सींचो नीर कहते हैं। कितना भी पानी डालोगे समय पर फल लगता है पेड़ों में, पौधों में। बस एग्रीकल्चर इतना ही है। इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि एक बंदा बीज छूने से पहले सोचता है कोकोपीट लाऊं कि वहां से ग्रो बैग लाऊं कि पहले मास्क लेके आऊं कि हैंड ग्लोव्स लेके आऊं। अरे तुम चांद पर जा रहे हो। So that how to do thing is very very simple, not that tough. It's shamelessly simple but amazingly durable, and that is what we did. That is what we did on हमने इसको सत्यापित किया। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं मन को साक्ष्य की आवश्यकता होती है। माइंड नीड्स प्रूफ, है ना। प्रूफ देने के लिए उस पहाड़ पे, पहाड़ माने क्या, अ शीट ऑफ रॉक, वहां पर हमने उगाया और आपको ग्रीनरी वहां आ गई 6 महीने में, 8 महीने में ग्रीनरी आनी शुरू हो गई। एंड दिस वीडियो विच इज बीइंग शेयर्ड, इट इज द एग्जांपल ऑफ दैट। भोजन की बात आती है ना जब, तभी खेती की बात शुरू हो जाती है। हमारे संसार में ना गड़बड़ी यही हो गई कि हम भोजन को अलग देखते हैं और खेती को अलग देखते हैं। भोजन माने सॉल्यूशन, खेती माने समस्या। खेती प्रायोरिटी नहीं है तो भोजन भी प्रायोरिटी नहीं हो पाएगा, हेल्थ भी प्रायोरिटी नहीं है। Yeah, audio is good. तो हमने जो यहाँ पर करा है ना, जो तरीके हमने अपनाए हैं, उसमें हम कृषि, धरती, जल और वायु, ये 3 से हम प्रभावित हैं और ये तीनों हमसे प्रभावित। तो हमने जो यहाँ पर जो विधि अपनाया उसको बोलते हैं परमाकल्चर, परमानेंट कल्चर बोलते हैं। रेन वाटर को हार्वेस्ट करके करने का, धरती पर ज्यादा मशीनरी नहीं चलाने का, सीजन के हिसाब से उगाने का, एक साथ 1000 चीजें उगाने का, ये 4-5 चीजें बस इतना ही किया और उसका रिजल्ट आ गया 3-4 महीने में। तो परमाकल्चर जो बोलता है ना, ये मुझे लगता है ये आज की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये हवा, पानी और धरती, इन तीनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही काम करता है। यही एक सबसे बड़ी खासियत है इसकी, मुझे अच्छा इसलिए लगा। और हम दिखाएंगे आपको, ये पूरा जो जगह है, ये पूरा का पूरा एक पहाड़ है। आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा, 4-6 इंच के बाद यहाँ कुछ नहीं है, पत्थर है, स्लोप है, यहाँ ढाल है, 40 डिग्री की ढाल है, लेकिन ग्रीनरी यहाँ। अब हमको जंगल इतना हो गया कि काटना पड़ता है। कैसे हो गया? आज तक एक ट्रैक्टर नहीं चलाया यहाँ पर, ब्रह्म राक्षस। अब आप प्रश्न पूछोगे कि इतना सब तो थ्योरी तो बहुत समझ गया, हाँ करना चाहिए, करते कैसे हैं भाई? करते कैसे? मैं बोलता हूँ इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। आप ऐसा मत समझना कि बड़ा कोई जटिल चीज है। पानी को जमीन में जाने दो, उसको आजकल लोग अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हमारे यहाँ भारत के हर गांव में, ईरान से लेके श्रीलंका तक आप देखो, हर एक गांव में वास्तु के हिसाब से एक तालाब मिलेगा। और वहां से देखिए 5 मीटर दूर, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए पहाड़ है, ये पूरा का पूरा ये पत्थर है। और इस जमीन में थोड़ा सा नीचे आप अगर जाएं तो 4 से 6 इंच के बाद यहाँ पर अब इसके नीचे नहीं जा सकते। तो कुल मिला के इतना ही है। और ये हरियाली इसमें इसीलिए आ गई क्योंकि हम इसके अंदर पानी बह रहा है हमारा बारिश का, वो पानी इसमें कैसे जा रहा है हम दिखाते हैं आप। और यहाँ पर कहीं भी हाथ दो तो क्या निकलता है? पत्थर ही निकलते हैं। ये देखो सब पत्थर है। तो अब क्या करना है? पानी को बचाइए, कुएं खोदिए, बारिश के पानी का पॉन्ड बनाइए, 1-2 साल बस, उसके बाद आपका वो अस्थायी हो, चिरंजीवी हो जाएगा वो, मतलब हमेशा जीवित रहेगा। अभी हमारा आगे का है, यहाँ 100-200 मीटर आगे बोरवेल है, वो 10-12 साल से सूखा था। अभी 4 साल इस धरती पर पानी अंदर गया 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 तो बोरवेल रिचार्ज हो गया। पानी को धरती में जाने देने का 3 रूल है। पहले धीमा करिए, फैलाइए, फिर डुबाइए। जो स्पीड में पानी जाता है वो ऊपर ऊपर निकल जाता है, वही भूमि का ऊपरी सतह जो सबसे ज्यादा उपजाऊ उसको लेके जाता है। जब पानी स्लो होगा
तो वो फैलेगा, छोटे छोटे लाइंस में भी जाएगा, और जब जाएगा स्लो में होगा तो धरती उसको इनवाइट करती है, और हर अगली बार वो काम और ज्यादा होगा और ज्यादा होगा और ज्यादा होगा, तभी धरती में पानी जाता है तो ये जंगल दिखता है। तो अगर यहाँ जब घूमेंगे ना थोड़ा तो आपको पता चलेगा, आप देखेंगे, दिखाऊंगा आपको कैसे हमने नाले बनाए और किस तरीके से बनाया कि ये पहाड़ पर पानी जब आता है ना, बारिश का पानी, तो ऐसे जाता है, मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं, बहुरैखिक दिशा में जाता है, ये हर जगह जाता है। लेकिन हमने नाले इस होशियारी से बनाया कि बस वो जाएगा तो पानी नाले में ही जाएगा। तो पानी जब ऊपर से आएगा तो नाले में जाते जाते उसकी स्पीड मर जाएगी, वो फैला हुआ आता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर सिंक होता है, माने इसमें डूबता है। 3 फीट गहरा है ये नाला, और जो मिट्टी इससे निकली वो ढाल की तरफ डाला हमने, तब ऐसे ऐसे 12 नाले हमने बनाए। हम आपको और दिखाते हैं, आइए। और ये जितनी भी हरियाली दिख रही है आपको, जंगल लग रहा हो या कुछ फसल दिख रही हो, घास दिख रहा हो, वो सब कुछ 2013 अक्टूबर के बाद से ही आया है। 5वां साल जा रहा है, 5वीं बारिश से होने वाली है। और अब अगर यहाँ पर 3-4 घंटे लगातार अगर जोर की बारिश हो जाए तो ये नाला भर जाता है और 1 महीने तक भरा रहता है। पिछली बारिश में 20 से 22 दिन तक भरा रहा, माने क्या, अब इसके अंदर और पानी जाने का जगह नहीं है। तो ये है रिजल्ट, 4 साल में आया, 4 साल का पेशेंस, तो पत्थरों पे पानी आ गया। मिट्टी जो है ना वो सेंटर्ड चीज है। इस ग्रेविटेशन जो शब्द है, गुरुत्वाकर्षण, वो जमीन को ही इंगित करता है। लिविंग सॉइल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। इसमें कहते हैं 1 मुट्ठी मिट्टी में इतने जीवाणु कीटाणु हैं जितना इस धरती पर इंसान नहीं है। इतने जीवाणु कीटाणु हैं जो इस मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी बना के रखे हैं। तो इसको जब हम प्रेस करते हैं, ज्यादा जब इसको दबाव देंगे तो अंदर के सब मर जाते हैं, और जैसे इनके सारे जीवाणु कीटाणु मरते हैं ये मिट्टी धूल हो जाती है। खेत में जलाना कुछ नहीं। आप देखो ईंट कैसे बनता है, मिट्टी को प्रोसेस करके उसमें जब मिट्टी को जलाते हैं तो ईंट बन जाता है। और ईंट में कुछ पानी खाद कुछ डालोगे तो कुछ उगेगा क्या? नहीं उगेगा ना। तो हर साल जो आप गेहूं काट लिया, कपास काट लिया, जो भी हुआ वो करके आग लगाते हैं तो धरती का कुछ लेयर 2-4 mm, थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच हर साल में 3 बार जलता है। और आप क्या करते हैं, जला के पानी छोड़ देते हैं। आपको लगता है वो राख पोटाश बन गया, अमृत हो गई। अब फिर पीछे से ट्रैक्टर चलते, जो जला हुआ था उसको पलट दिया, अब फिर उसमें उगाएंगे, फिर उसको जलाएंगे। तो 2-4 बार पलट के आग लगाया ना, तो जान लो आपका 1 फीट का मिट्टी ईंट बन गया है। खाली ट्रैक्टर चलता है, उसको रौंद के रखा, नहीं तो ईंट हो ही गया होता। अब उस ईंट में आप लगे हैं यूरिया और पेस्टिसाइड लेके कुछ उगा लें आप। दूसरा, एक साथ सीजनल और लोकल बहुत सारी चीजें लगाइए खेत में। और जैसे बीज डालने की बात आती है तो किसान बोलते हैं कीड़े लगते हैं, उसका क्या करें? स्वास्थ्य की बात करो ना, बीमारी की बात बाद में कर लेंगे। और आपको बीमारी से उतना ही डर लगता है तो आप देखना, पहले गेंदे लगाते थे। गेंदा जो है वो गुरु का काम करता है। माने क्या, गुरु क्या करते हैं, सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और भक्त सुखी रहे। गेंदा वही करता है, सारे कीड़ों को अपने ऊपर आकर्षित कर लेता है, उसको पेस्ट अट्रैक्टर बोलते हैं। तो गेंदा डालिए तो क्या होगा, कीड़े जो गेहूं या गोभी में आने वाले थे उस पर जाएंगे। 80% 90%। देखिए गेंदा है ये, बोला नहीं, यहाँ बाउंड्रीज पे गेंदा लगा। गेंदा ने कितना जगह पकड़ा है हमारा, आधे इंच से भी कम का जगह लिया इसने। ये फैलेगा, जितना फैलेगा आजू बाजू के कीड़े इसके ऊपर आएंगे। फिर तुलसी लगाइए खेतों में, प्याज लगाइए, लहसुन लगाइए। प्याज और लहसुन इतना सा जगह लेता है। कभी प्याज के पत्ते और लहसुन के पत्ते में कीड़े लगे देखे क्या आपने? कोई भी कीड़ा नहीं। क्यों? उसका स्मेल ऐसा होता है कि कीड़े भाग जाते हैं। ये आपको पता है, करेंगे नहीं, बस ये गड़बड़ी है। तुलसी जी के पौधे में कीड़ा नहीं देखा हो। क्यों? 24 घंटे तुलसी माता ऑक्सीजन देती है, इसीलिए उनकी पूजा हम इसीलिए करते हैं। तो तुलसी, प्याज, लहसुन, एक चाइव्स करके आता है, वो लहसुन का स्मेल देता है। उसमें जड़ में कुछ नहीं आता, पत्तों में स्मेल होता है लहसुन का। एलोवेरा, घृत कुमारी डाल बोलते हैं उसको, वो डालिए। घृत कुमारी नाम कितना बढ़िया है, अमृत है वो, उसको डालिए। उसमें भी ऑक्सीजन बहुत होता है। हमने सब डाल के देखा, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, ये ऐसा हमने किया है। और आप हमारे खेत घूमते हैं अगर, तो आपको पता होगा कितने जगह आपको कीड़े मिलेंगे। और अगर कहीं कीड़े हैं तो जान लो ये धरती कभी भी कीड़ों से विहीन नहीं थी। राम पैदा हुए उसके पहले रावण मौजूद था। आपके खेत में 80% फसल सेफ रह जाए तो मुझे लगता है आपकी कमाई हो गई। अब दूसरा देखिए, हमने अदरक लगाया बाजू में। अब ये कहां से अदरक निकल रहा है?
ये कंबाइंड फैमिली की जो मैंने बात करी वो देखो वही है ज्वाइंट फैमिली। ये पोई का साग, ये करंज का पौधा, ये अदरक, ये देखो इनके बीच से ये 1 इंच की जगह नहीं है, यहाँ से 3 अदरक के पौधे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसके नीचे स्पेस है, जगह है, जड़ नीचे नहीं गया है, सब बाजू में फैले। देखो छोटे से छोटा जड़ भी ये बाजू में जा रहा है। ये कड़ी पत्ता का पौधा, पपीता लगा, ये पपीता है, अभी अभी लगाया हमने। ये गोंगूरा है, आंध्रा के लोग बड़ा पसंद करते हैं। ऐसे तरह से मिला जुला के लगाते हैं, एक साथ बहुत सारे फसल लगाइए। लाइफ ग्रोज व्हेन यू टेक केयर ऑफ द अर्थ। तो एक साथ बहुत सारा चीज आपके पास होगा, और जो उगाते हैं उसका बीज बनाइए। तो 12 एलिमेंट्स बोलते हैं पर्माकल्चर के होते हैं, है ना। उसमें यही सारा चीज है, जो भी चीज हमने बोला वही बोलता है। अपना खाद खुद बनाओ, अपनी पानी खुद बनाओ, अपना बीज खुद बनाओ, कुछ भी वेस्ट नहीं होने दो, आग नहीं लगाना। और लोग को यह सलाह देने आता है ना, तो वो जरूर मानना। तो इतना सस्टेन्ड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बस उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं और ऐसे स्प्रेड करते हैं। सब जीता है जंगल में, जैसे छोटा पौधा भी सुखी है, एक गिरगिट भी, छिपकली भी रह रहा है, और एक शेर भी रह रहा है, कोई बीमार नहीं हुआ। बड़े पेड़ भी सुखी हैं, छोटे पौधा भी सुखी है। ये समाज की संरचना होनी चाहिए। यह इस जगह पे ना हम आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। देखो आम का पौधा है, इसकी छाया यहाँ तक आ रही है ना। अब इसके अंदर में ये जगह जनरली किसी बड़े पेड़ के नीचे की जो जगह होती है, गिल्ड बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, वो बर्बाद ही जाता है, कुछ नहीं होता। और इस जगह पे देखिए अदरक हमने लगाया है। ऐसा हमारा खेत होना चाहिए कि अब लेयर फार्मिंग बोल रहे हैं आजकल, मल्टी लेयर फार्मिंग बोलते हैं। माने क्या, बड़ा पेड़ लगाया, फ्री साइड का लगाया, फ्री साइड का लगाया, फिर नीचे क्रीपर लगा दिया। खेत की चीज खेत में ही सड़ जाए। फसल का हार्वेस्ट हो गया, जो भी उससे बेल निकलनी थी, फल निकलना था, अनाज निकल गया, जो पौधा बच गया उसको काट के वहीं छोड़ दीजिए, वो सड़ जाता है। उसका अपना प्रकृति है, वो 2-3 महीने में, 108 दिन में खेत का हर फसल का जो रेसिड्यू है, जो भी पुआल है, जो भी है, 108 दिन में सड़ जाता है। और यहाँ पर है क्या, ये देखो घास जिसमें आग लगती है, यही जब सड़ा तो मिट्टी बना, और ये मिट्टी एकदम ठंडा, अगले 10 दिन तक ये ठंडा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जब इसके ऊपर कंबल और रजाई की तरह हमने जब ढक दिया, तो धूप है वो मिट्टी में डायरेक्ट नहीं लगता, और जो धूप डायरेक्ट नहीं लगता तो पानी जो है वो ज़्यादा दिन तक इसमें रह पाता है। और हमारे पौधों को पानी नहीं चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है, ठंडक चाहिए होती है, ठंडक। आपको पानी देना है तो आराम से दीजिए पानी, जो मैं बता रहा था ना कि पहले उसको धीरे करिए, फैलाइए, नीचे जाने दीजिए। तो इसको जब ढक के रखते हैं ना, तो पानी 1 दिन का दिया हुआ पानी 10 दिन टिकता है। और जब इसके ऊपर से पानी पड़ेगा, कभी इसके ऊपर गोबर का घोल जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक सड़ जाता है। इसका लाइफ है 108 दिन। 10 दिन पानी नहीं दूं, बारिश नहीं हो, फिर भी आप हाथ दोगे, हमारी मिट्टी आपको ठंडी मिलेगी। इसको ढक के रखते, इसीलिए ये सारे जो इसको मल्च आच्छादन बोलते हैं ना, ये ढक के रखो। ये इसका जब आपको यूज पता चल जाएगा कि इसके लाभ हैं, तो फिर इसमें आग नहीं लगी। हम आग इसलिए लगाते हैं कि हमको ये अनुपयोगी लगता है। हमारे लिए ये 1.5-2 महीने बाद हमको फिर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सड़ के खाद बन जाएगा। इसने इस धरती का 30% जो पौष्टिक तत्व है, पौष्टिक तत्व धरती से लिया होगा इसने। और जब इसको काट के वापस डालेंगे तो 30% जो कमी हुई थी धरती में, ये वापस पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी पौष्टिकता को बरकरार रखते हैं। और आज जो हमको अमेरिकन यहाँ सिखा के क्या पर्माकल्चर बोलते हैं, चॉप एंड ड्रॉप। तुम्हारे एक भाई ने बोला, तेरा तुझको अर्पण। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ से वहां तक, ये सारे कचरे हैं हमारे। ये हमारा जंगली घास है, खेत से कटा है। इसके नीचे ये गोबर है, इसमें बीच में घास डाल दिया, ये सूखा डाल दिया। ऐसे ही एक के बाद एक लेयर बनाते गए, कहीं हरा तो कहीं सूखा, तो कहीं हरा तो कहीं सूखा। और ये यहाँ से कंपोस्ट बनेगा और यहाँ बाजू के खेत में डालेंगे। दूसरे और 1000 तरीके होंगे कंपोस्ट बनाने के, लेकिन मुझे लगता है ये सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। अगर ये कचरा नहीं आता यहाँ तो कहीं जल जाता। तो जो हमने शुरू में बात करी कि खेती हमारा ऐसा हो जो हमारी जलवायु को भी प्रभावित नहीं करे, खराब नहीं करे। हमने एक कहावत है, आपने सुना हुआ, कहते हैं कि अगर एम्बेसडर गाड़ी चला ली ना तो बाकी सब कार चला लेंगे। तो हमने सबसे कठिन जगह पे करके दिखाया है कि अगर ये पहाड़ पे, पत्थरों पे उग सकता है तो बाकी जमीन पे क्यों नहीं हो सकता। नहीं तो जितना जहर आप एक फसल में डालते हैं ना, खाली 30% पौधा लेता है, 70% जमीन में जाता है। ये वैज्ञानिक बोलता है, जिसने जहर बनाया वही बोलता है। अगर 100 का 100% पौधे में रह जाता तो पहला केला और आदमी मर जाता, पहला केला खा के आदमी मर जाता। लेकिन 70% धरती ले लेती है। जहर का वापस जहर नहीं आ रहा।
Thank you. So, was it informative or something? Yeah, Vinay ji. Actually, the YouTube videos and all, jo we have, we will share them to the audience, and they can watch it. So, Yes. and we found that these practices can find the best solution in the most unlikely places. Like any place can be made into a green forest or Definitely. something. Yes. Definitely. So Definitely. yeah, No, and and every one of us know that on a crack of a wall or on your rooftop, some plants do grow. Yes. They don't look for, soil or cocoa peat or anything, your effort. That means stones also, all over the stone, over the concrete, over the roof, anywhere, things can grow. Provided there is a proper effort, guided effort, right? Yes. Yes. So what do we do now? Oh, it's 5:05 now. So Yeah, it's already 5:45. I would request Neelam Manjunath ma'am to share her thoughts. any question and No, all no, that? Yeah. नहीं, I think मेरे लिए कई बार हमने गमले लगाए और सब लगाए लेकिन हमारा वेजिटेबल फार्म उग नहीं पाया. काफी बड़ी जगह है हमारे पास, पर हमारा वेजिटेबल गार्डन हो नहीं पाया. एंड सो इट इज अ वेरी वैल्यूएबल टिप्स, आपसे आपका आज सुना हमने. एंड आई एम वेरी श्योर आई विल ट्राई इट एंड मेक माई सेल्फ सफिशिएंट. काफी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो somehow वो नहीं हो पा रहा है. सो नाउ नो प्रॉब्लम, ही हो जाएगा. वो थोड़ा सा करना पहला जरूरी है. टैग लाइन जो हमारा होना चाहिए ना, वो हम बाजार नहीं जाएंगे किसी चीज को खरीदने के लिए. उगाना हो कुछ तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग, वो पहला लाइन होना चाहिए. सेकंड लाइन, इन सिटीज इफ वी आर डूइंग समथिंग दैट मींस वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ द इकोलॉजी एज वेल. क्योंकि जलवायु जो खराब है वो शहर में ज्यादा हुई है, प्रभावित यहीं से गड़बड़ी ज्यादा आती है. बेंगलोर का तो डेटा है कि रेसिडेंशियल एरियाज आर क्रिएटिंग मोर पॉल्यूशन देन द इंडस्ट्रियल एरियाज. ये रिसेंट डेटा है 2019 और 20 का, है ना. तो अब जब आपका जो 62% इज योर वेट वेस्ट, दैट मीन्स दैट कैन डीकम्पोज. उसको अगर उसी को खाद बना के उगा लेते हैं तो आपकी इकोलॉजी भी बैलेंस रहती है. 62% पॉल्यूशन कम हो गया आपके तरफ से. मे बी इट्स a 0.00001%, but it is there. And things when grow, suppose even if एक पालक उगता है, एक पालक का पत्ता, when you taste that, know that you have tasted the authentic पालक. ऐसा ही पालक होना चाहिए. अब आप कंपेयर कर सकते हो स्वाद से. बाजार से लाते हैं वो ऐसा है कि नहीं, खरीदी हुई चीजों पर कोई भरोसा नहीं आजकल. तो ये कंपैरिजन आ जाए तो पर सही जगह हम ढूंढ सकते हैं कि भाई ये वाला ऐसा है कि नहीं. अब जब पता ही नहीं हो कि 2+ होता है कि 5, तो फिर काम कैसे, बात कैसे बढ़ेगा. तो ये इतना सिंपल है. तो कंपोस्ट बनाना, अब देयर आर लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, बट मुझे लगता है कि अगर कोई प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्टिंग इज पुशिंग यू टू द सिटी, आप ये ड्रम खरीद के लाइए, आप ऐसा लेके आइए, उसमें आप ये माइक्रोब्स डालिए, तो आई थिंक दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल. मे बी आई एंड यू हैव मनी, विल डू इट, बट द वन हु डजंट हैव मनी एंड द इंटेंट ऑल्सो, तो बोलेगा अरे ये महंगा है, छोड़ो, इतने में तो हम सब्जी खरीद लेंगे. तो काम तब वहीं पर डूम हो गया वो. अगर हम कोई कॉपी वाला मॉडल बनाए, एकदम क्या बोलते हैं जीरो बजट जैसा, कुछ लग नहीं रहा, कचरे का टूटा बाल्टी था उसी में उगा लिया. प्लास्टिक के बोतल में हम कितने बच्चों को हमने बर्थडे मनाने में दिया, उनको तुलसी उगा के और पता नहीं क्या क्या उगा के, धनिया उगा के. इफ यू डू दैट वे, देन इट इज क्या बोलते हैं, वो कॉपी जरूर ज्यादा होगा, फैलेगा ज्यादा, मल्टीप्लाई ज्यादा होगा, एंड दैट एफर्ट इज वर्थ trying it. So if any question kind of thing is there, then I'm open to that. Otherwise, एक क्वेश्चन है, आई थिंक कार्तिक, यू कैन जस्ट क्वेश्चन. Yes, ma'am. So Vinay ji, You can address Muni Rival is asking, are there any labs in Gujarat that do HANEY and other soil tests? And also he asked, any lab doing PLFA tests? see, ये जो टेस्टिंग वाला चीज है ना, इसको थोड़ा समझ लीजिए क्विकली. ये सब ना आज की खोज है. जब से ये इंडस्ट्रियल फार्मिंग आया तब से हुआ है कि सॉइल का टेस्टिंग करना. जैसे होता है ना, अभी जैसे ही आदमी 40-50 रीच करता है, उसको लगता है यार साल में एक बार ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए. क्या पता बीमार हो जाए, नहीं पता ना, क्या पता तुम पहलवान हो जाओ. ये सॉइल टेस्टिंग इज ए फार्स.
You know, the soil of the carbon content in the soil of a forest, how much it is? 75%. उसकी कोई टेस्टिंग की जरूरत है क्या वहां पर? क्यों? हर चीज, हर प्रैक्टिस वहां हेल्दी है। और हमारे आपके खेत में कितना पता है आपको? 0.5%, एंड स्टिल डिक्रीजिंग with all that testing labs and all that ingredients that are prescribed to put, ये डालो वो डालो, सब कुछ करके भी it's 0.5%. And that is where I got an idea कि carbon in air is pollution, carbon in soil is solution. So do not burn it. If you burn, you pollute, you degrade it, you decompose it, तो बढ़ जाएगा आपका। अगर सॉइल में ना जितनी चीजें हम बता रहे हैं ना कि सब कुछ जो खेत का है ना सब सड़ा दो उधर ही, माइनस प्लास्टिक एंड माइनस कुक्ड फूड, लेट एवरीथिंग डीकम्पोज, आपको सॉइल टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड थिंग, सॉइल टेस्टिंग टेक्स 6 months of time, and majority of the labs, they don't have that knowledge and that machine and that idea to give the typical content, microbial content or chemical content, whatever of soil. यार धरती इतनी बड़ी है, the massive structure on this planet is the earth, आप उसका बता देंगे? आप इतना जल्दी बता दो? It is very very costly and the labs are very rare. जो खदान वाले लोग होते हैं ना, वो करते हैं इसकी टेस्टिंग, और कोई फार्मर नहीं करा सकते। वो 50,000 1 लाख रुपया ऐसे चार्ज करते, वो देंगे आपको डेटा। बट अल्टीमेटली इट्स लाइक यू गो फॉर एन एक्सरे, वहां से बताएगा तो डॉक्टर बोलेगा यहाँ से एक्सरे लाओगे तभी मैं मानूंगा, फ्रॉम दैट एक्सरे शॉप, वहां से दवाई लाओगे तभी। ये जो है लैब टेस्टिंग है, ये केमिकल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक चीज है। देखो आपके यहाँ ये नाइट्रोजन कम है तो यूरिया डाल दो, ये कम है तो पोटाश डाल दो, ऐसा ऐसा वाला। बट अगर आपकी प्रैक्टिस सही हो ना, सॉइल फर्टिलिटी अगर आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो यू विल बी इन ए सिचुएशन वेयर द टिपिकल सॉइल टेस्टिंग इज नॉट नीडेड। दैट इज सेकंड थिंग। इफ स्टिल देयर इज उतना टाइम नहीं है, उतना पेशेंस नहीं है, उतने रिसोर्सेस नहीं है टू मेक द सॉइल फर्टाइल, then if you go to lab testing, go to some credible places जहां पर वो सही से करके देंगे, some agriculture university or something. Not all these small private labs will give you the right data. और जब वो देने के बाद रिपोर्ट देते हैं, मुनि जी जस्ट लेट मी कंप्लीट, आई माइट नॉट नो एवरीथिंग इन द सॉइल टेस्टिंग, क्योंकि मैंने कभी आज तक कराया नहीं है, लेकिन जो हमने देखा है उसका अनुभव एक बार शेयर कर देता हूँ, राइट और रॉन्ग दैट विल सी। तो अगर जब वो आपको बताते हैं कि योर सॉइल इज डिफिशिएंट इन these things, then don't go for chemicals options to do this. Go for the natural options, like sugarcane bagasse is the richest in potash, coconut shells are the richest in potash. Anywhere in India either of these is available. Can I come in for a minute, sir? है ना? तो बस मैं I'm done. तो जो भी इस तरह के जो चीजें होंगी ना जिससे आपका नेचुरली उस चीज को नलिफाई किया जा सकेगा, वो प्रैक्टिस में जाएंगे, देन यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन, है ना? हाँ प्लीज सर। सर मैं जो आपसे पूछ रहा था वो कोई केमिकल टेस्ट नहीं है। हाँ हाँ, दे आर माइक्रोबियल proportions test, fungi versus bacteria. Or any scientific query cannot be looked through a lens of suspicion. There are certain deeper layers of seekers जो कुदरत की विशेषता को समझने की कोशिश में है। बिल्कुल, हर कोई व्यापारी नहीं है साहब। यस यस, अगर हर कोई व्यापारी होता तो आश्रम यहां तक आया कैसे? And if your intentions are clean, so can be others also. Definitely. नहीं, I was talking from the larger perspective. मैंने सवाल पूछा तो आपने मार्केट के नजर से देखा। ये yes. मुझे आपसे ये पूछना है कि everybody is not a trader. There are certain seekers also. That is where I said कि typical soil testing happens in this way, these places, है ना, जहां पर आपको सही चीज मिलेगा। माने क्या, सही चीज अवेलेबल है तभी तो मिलेगा। लेकिन वहां पर ये भी है कि नॉर्मल एज ए लेमैन, कोई एक नॉर्मल किसान जाता है, उसको कोई बोल देता है भाई आपने टेस्टिंग करा लो तो फिर आपको ये खेत ऐसे ऐसे अच्छा हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? उसको उतना पता ही नहीं है। वो जाता है किसी दुकान वाले को पूछता है, वो कहीं रेफर करता है। तो जो नॉर्मल व्यवस्था है ना वो ऐसी वाली है, बट ऐसी वाली चीजें जो है वो आपको पता है, हमें पता है। तो ये इसीलिए हमें लोगों को बताना चाहिए कि ये सब तरीका है, वहां पर जाके करा लो। लेकिन सर एक बात और है मुनि जी,
I might be wrong, but my experience is कि if the soil fertility is taken care, 70% of soil health is taken care if there is the ratio of moisture and air is balanced. That is 70% of the soil health and plant health also. तो मेजर पोर्शन वहीं सही हो जाता है. तो अगर वहां पर अच्छे से पत्थरों पर भी सही से डालते रहे ना सब कुछ एकदम भरपूर मात्रा में, तो फिर वो सारे माइक्रोब्स ये वो अननोइंगली और नोइंगली वो सब एक बैलेंस में आ जाते हैं. That is where I need to know with some certainty, क्योंकि जो अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है जी. सवाल ये है कि फीडिंग 10 बिलियन बाय 2050, if we want to jack up our production, we will have to have definite information. By chance तो हो जाता है तो मालिक मेहरबान है. हाँ सर, इस पर भी एक डेटा है बड़ा मस्त सा. आज केमिकली हम अभी तक जो 60-70 साल से केमिकल फार्मिंग करे, राइट और रॉन्ग दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऐसा हो रहा है. मैं केमिकल फार्मिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर. वी आर ग्रोइंग 4 times मोर देन आवर कंजम्पशन का नीड. मैं केमिकल फार्मिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ कि जो पॉपुलेशन वर्सेस प्रोडक्शन का जो डेटा है ना, कि वो हम आगे खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे, उसका दो बड़ा स्टार्टलिंग डेटा है. मे बी इट इज नॉट पब्लिक फोरम, आई डोंट नो हाउ. पहला तो है कि आधा दूध आधा फल आधी सब्जी भारत में रोज बर्बाद होती है. 40% गेहूं भारत का हर साल सड़ जाता है. पूरे दुनिया में जो चीजें उगाई जा रही हैं उसमें 5 अनाज हैं जो 70% उगाई जाती है. सर गलत डेटा पे हम किसी चीज का तो समर्थन करने की कोशिश ना करें. हाँ, मैं एक जो डेटा है ना मुनि जी, वो मुझे लगता है पब्लिक को जाननी चाहिए कि 83% ऑफ फर्टाइल लैंड ऑन दिस प्लैनेट इज बीइंग यूज्ड टू ग्रो फॉडर. 83%, दैट कुड बी 5-10% आगे पीछे. लेकिन 2017-18 में हमने पढ़ा था, वो एक वेबसाइट था, एक इंजीनियर ऑफ वन ऑफ द इंजीनियर शैलेश चौधरी और शैलेश रॉय, द इंजीनियर ऑफ इंटरनेट, जिन्होंने इंटरनेट बनाया था, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी कि stopday0.com. अब वो वेबसाइट फंक्शनल नहीं है. उसमें उन्होंने डाला था कि 83% of our fertile land on this planet is being used to grow fodder. Only 17% is giving growing grain, और उस पर हम बर्बाद करते हैं, खाते हैं, whatever. अगर पूरी धरती पर अनाज उगे तो अनाज से खाली अनाज इंसान ही नहीं खाता, वो जो पौधा का जो लिए होगा उससे जानवर भी खाएंगे. तो ये जो प्रोडक्शन पॉपुलेशन का डेटा है थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको सही तरीके से देखने की चीज है. बाकी तो Even grain, a seed is not designed to provide nutrition to a human body. A seed is supposed to protect the DNA of the seed of that plant so that the plant can grow whenever favorable conditions arise. Yes. जैसे हम आम खाते हैं तो आम की भी सीड नहीं खाते. हम चीकू खाते हैं तो चीकू का सीड नहीं खाते. यस. तो उसी तरह बाजरी, गेहूं, जो भी ज्वार वगैरह, पल्स वगैरह खाते हैं हम, it is not designed to give us any nutrition. I am only talking from a seeker's angle. मैं Yes, मुझे yes. मार्केट से या बाजार से या नहीं. उसकी करामत से कोई मतलब नहीं है. बट सवाल ये है कि सीड कैन, on the contrary, seed has certain phytic acids and other chemicals which will neutralize our digestive juices. Our medical fraternity has also not worked out it, and agriculturists have no idea about what is the seed meant for. Yes. You're 100% right. तो मैं तो कुछ और आगे जी. पाने की उम्मीद से बात कर रहा हूँ. कोई आई एम नॉट ट्राइंग टू आर्ग्यू आउटसाइड. बिल्कुल. नो, आई रियली अप्रिशिएट. मतलब ये सोच के लोग ना, मैं मतलब जो भी 96% ऑफ द ग्रेन, मतलब wheat, बाजरी and jowar we eat, 96% passes through the gut without any contribution to the human body. That means 96% of agriculture infrastructure is a waste. Economy तो यहां तक जाएंगे जब every molecule, every microbe role we understand. Right. तो उसकी जो पढ़ाई की जो बात है, कुछ खोजने की बात है, उसके साथ मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं. बिल्कुल. But 96% of infrastructure being a waste, a country like us and many other countries with limited resources just can't afford. Yes.
Yes. Dhanyavad. Thank you, Muniji. Honored, sir. Actually, I think this is Muniji, is another thing that we have is, as you were talking, the wheat, our food, composition of what we eat every day. The carbohydrate part has become so big, which is not supposed to be like that. And now, that's from my limited knowledge, what I am trying to take care of my health for the last, especially for the last 2 years, and it is told that the vegetables, first thing, and then you have fruits. I mean, these are something, if you eat them and very little amount of, so it's like 1/3, 1/3 and 1/3 you're supposed to eat. And earlier also it used to be like that. There's a lot of vegetables that we used to eat and other things. Now, if you see this pizza and all these kind of things and bread, there's so much of this, wheat content or other kind of a grains content which has come into that. That is also, I think, as per what you are saying, and as per what Binayji told. So I think if we more and more of vegetables and fruits and all that, I mean, पिज्जा कितने लोग खाते हैं? they are Urbanites grown, maybe probably we 1-2%. people. Pizza is not a national food. आप उसको No. छोड़, वो एयर मैं कंडीशन पिज्जा की केवल होटल बात में नहीं कर जाने रही, वाले जैसे राइस कितने भी हैं? है. I'm talking about Really, billion. even if हाँ. no rice, suppose there is rice, so generally rice का भी जो content है in proportion to your vegetable and protein, which is like lentils, it is much higher. It is something like that. So the sabzi ka content, the vegetable content is generally Rice is is going starch. on becoming smaller and smaller No. in our food habits. It is actually becoming this content is becoming more. No, And that is something which is, I just wanted to share. I may add to some maybe molecular my level. limited knowledge. We have digestive juices that can break down starch. We don't have any enzyme that can break down cellulose. We'll have to think in terms of molecules because the dimensions, the problems are so enormous. कभी कुछ डाला, कुछ हो गया खेत में तो अच्छा हुआ, मालिक मेहरबान थे. ये बात से मैं, वो तो मेहरबानी है, हम तक जिंदा है या अब तक, तो उसकी मेहरबानी है. हमने क्या किया बड़ा होने के लिए? सवाल ये है कि now we are in this age of information technology, we'll have to go to a subcellular level, submolecular level. सेल्यूलोज का एंजाइम ह्यूमन बॉडी में है ही नहीं, तो सेल्यूलोज आप कितना भी मुझे देंगे, मेरे शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा, ये मैं नहीं स्वीकार कर सकता. Because human body does not have any digestive juice or enzyme that can break down cellulose and convert it to glucose. Yes, starch we have. Makkah has lot of starch, corn. So हम ज्यादा चबाते हैं तो ज्यादा मीठा लगता है. Because saliva breaks down that starch. और हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि खुराक पियो. Means you chew it so much that even when cellulose cell walls start breaking down, inner starch will be available and converted to glucose, it will taste sweeter. सवाल ये है कि पुरानी जो ट्रेडिशंस के मुताबिक जो भी हमें लेसन्स दिया गया है, तो there was a lot of scientific understanding behind each tradition. Pizza is not our tradition, and those who have eaten pizza, they have understood their shortcomings very fast. No, I'm just, I just gave an example that there's so much of like maida and all this kind of thing which has come into our daily diets of especially the young people, which is a very alarming kind of a situation. नहीं, मैं वो fashionable world की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि it's a very small, minuscule percentage. How many people can afford 500 rupee pizza for one meal? That's a very, 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 very minusculest of population. So let's not worry about that. And they have their own means to meet their expectations. I am not talking about that. All I am talking is
No, a child who is 2-year-old. pizza was just an example. No, I understand. Pizza was I just take an it, example, and like there's a No, lot of bread. There's a lot of bread that is eaten, and bread is also like I do not know how that is my healthy. question. Bread दो तीन we दिन का cannot digest. दो तीन दिन का ब्रेड खाते हैं लोग, जबकि हम लोग रोटी कहते हैं कि बासी हो गया, तो एक दिन के बाद दूसरे दिन रोटी को हम लोग बहुत कम खाते हैं, कहते हैं बासी हो गया, so it should not be eaten. Anyway, But bread लोग 3 दिन 4 दिन और वो सब करके ऐसे खाते हैं. I mean, this is something which is really मजबूरी होती है. unhealthy. मजबूरी होती. मैं तो मजबूर लोगों की बात कर रहा हूँ. नहीं सर, मैं मजबूरी नहीं. No sir, I will not agree to that. I will tell you, because I am an architect. I had the opportunity to go for MNC firms, work for glass and aluminum buildings. I had that opportunity. I didn't. I made that choice. I made that conscious choice that I will not do it that way because I know it is wrong. I was really struggling for money in Bangalore. I came here. We hardly had money to even feed my daughter. Then I came here. And that's where we started in Bangalore, in a 2,000 rupees rented place. Still at that time, I said, no, I am not going to compromise on what I know is correct and right. Architecture, maybe there were so many people who said, oh, Vastu, that's another thing that came, and all this kind of things. I said, no, I'm not going to, just to get projects, just to earn money. I will not do that. Because then, and slowly, earlier in the beginning, my people, even my own family probably did not understand what I was trying to do, but they all understand it. And I think the moment you give that thing to the next generation, and next generation is very important. I mean, they are the people who are supposed to, so I made that conscious choice. And even now I work a lot with bamboo. I mean, that's one example. But still I'm not very popular with builders and these kind of people and the Bali architecture of bamboo, and then several people like that. Why? I use bamboo for sustainability, not for business. I am trying to promote bamboo to house those people who are at the bottom of the pyramid, the last person who has been preserving bamboo for so many years, not the people who can have a second home of $1 billion in the this thing of Bali. I mean, bamboo is not supposed to do that, Can we can all make a conscious choice. We can all make a conscious choice and do our bit, what we can do, and then slowly the seeds will go around. I mean, it's like they'll spread around. And that's what I'm just trying to say, that even in food, as Binayji was telling, I mean, and what you are telling, we really need to get this across to people. My only point for Bangalore, I'm in touch with many architects and NIU and Smart City, all that. In 1890, Bangalore was Garden of Eden at 56 liter per capita water supply. And what is Bangalore today at 300 plus, you know it better. So let us not, because everything will be connected ultimately. When we talk about sustainable living, what is the simple logic of NBC for 300 liter per capita water supply? I've been throwing NBC. No, sir. I think that's a wrong data you have. It's 135. I know, per day. But Bangalore is 250 plus. Bangalore is 250 plus. Why? Any designer? IT people think. No, sir. I will tell you, sir. IT people think that since they can pay, they should have 12 kilowatt or 16 kilowatt for their houses, and they should have this kind of a liter of water for their buildings. They say we can pay and we should. So it's like, I want a bus stop, but not in front of my house. I want a bus stop near my house, but not in front of my or next to my house. So these are some things which, and I'm really sorry about Bangalore. That's been completely spoiled. IT city, they have made into the IT city. IT thing has completely destroyed Bangalore. I'm really sorry to say. Anyway, completely destroyed. We are transgressing. Yeah. But let's not. Anyway, we are running out of time. Anyway, yeah, we should. Yeah. Thank you.
And Thank even you. I just wanted to 135, there is no logic. I will So, Yeah. madam, I will it- just small. Yes, sir. at 135 LPCD, there is no scientific explanation, period. I know. So There are people who NBC are has to working with 60. NBC has to People explain who are why working 130. with 60. Sorry? Yeah, there are people working with 60 liters also, and they are surviving well. So we have to really redefine things. But the whole, as I said, I think as Binayji also was telling, who is at the helm of affairs? Who is driving the whole thing? They are under pressure from the politicians and the builders and the people and all those kind of people who have to make business. For every small thing, they See, want to do business. what I feel, no, And that's where the problem we is. are. Okay, so we will, sir, we will continue this discussion. I will continue this discussion. All data is at one place, separately. reality is one place, and there is no direct. Data You will will talk excuse me, louder. I have to go to some other sessions. हाँ, But तो I Yeah, so really one enjoyed this. second. Yeah. हाँ, Yeah, बोलिए। can I just yeah. So Binay ji, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं वही बोल रहा था. Sorry. Data and reality will always have, distance, and that is what it is. Yeah. Before we are connected to reality, it's my life, my health, my choice. With awareness, if we can take care of the Yeah. things, we'll be at least, Yeah. regarded or respected better by our future generation. इतना ही है. बाकी तो चीज कर लेंगे हम. वो जब हम हमारे आयुर्वेद में कहते हैं षट रस होना चाहिए, 6 स्वाद होने चाहिए भोजन में. 1400-1500 की चावल अभी बची हुई है भारत में, अभी बचा हुआ 1.5 लाख था. और आज जो फसल उगाते हैं पूरी दुनिया में 70% जो फसल है वो खाली 5 फसल है. चावल, गेहूं, मक्का और क्या है, 4 ही है. चावल, गेहूं, मक्का, सोया की जगह कोई गन्ना बोल देता है, कोई सोया. 4 चीजें 70%, एंड आउट ऑफ दिस 4 राइस इज 70%. और उसमें पॉलिश होगा, उसका लिपस्टिक लगेगा, उसमें चकाचक होगा, उसको हम खाएंगे, अच्छा लगेगा तभी लेंगे. ऑल दैट गोज ऑन. अल्टीमेटली अमंग ऑल दिस सर्कस वी हैव टू डिसाइड कि भाई उगाना क्या है और खाना क्या है ना. अब साइंस भले कहता हो कि ये पचता है, ये नहीं पचता, वो भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन पेट भरने की जब बात आती है तो पहले वही देखते हैं कि पेट भरा है कि नहीं, है ना. बाद में वो सब भी देख लेंगे. और ग्रेन्स और राइस और जो भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो इतने मिलेनियम से चली आ रही है धरती पर, और हमने खाया है उनको. लेकिन आज हालत ऐसी है कि 60% ऑफ द फूड शुड बी द ग्रीन्स. नहीं तो हम इतना गड़बड़ कर चुके हैं कि डाइजेस्टिव फायर हमारा ये है. majority of the population is constipated, and from there arises all the side effects of health and all that. सब वहीं से शुरू होता है. Anyways, ये सब तो बढ़िया है, but discussion is good. Okay. ऐसे ही awareness आता है, and thank you so much for all that opportunity and everything. And if something I spoke which was not that good for you, you didn't agree, not Muniji for you, I'm telling about the whole gang over here. Yeah, of course. Experience, and what I talk is this is my experience in the farm, and that when I deal with the agriculture colleges, the farmers, and I find there is no connection in what they are teaching or learning and what they're practicing in the farm. There is no connection at all, not even 1%. Basis that what I talk. So do not take it otherwise, and thank you so much. Thank you, Binayji, for sharing your knowledge. Thank you. It is very insightful, and know about permaculture through your experience. So, yeah. Ma'am, do you want to say anything? Yeah, I just wanted to share this about a book that from 1999 I have been working with bamboo, and I would like to. I have now put all the data in a form of a book, and I would like to just quickly. This is about building with bamboo, and this is right now in editing this thing phase. But we are taking on bookings. You can pre-book your book on this, and this is in 2 volumes. And this is not a technical guide. This is also not a coffee table book. We have made this book a very user-friendly kind of a book where anyone who's interested in learning
and doing something with construction with bamboo, this book will be very useful for them. And it can also be used by architecture and civil engineering students as a beginner. And beginner means you can build with it. But the other part of it, which is a very engineering kind of equations and things, we have tried to avoid that data so that it is and we have concentrated more on practical experiential learning, as Binayji was calling, of with working with bamboo for so many years. So this book is about experiential way to learn and build with bamboo. And I just wanted to share this, and over to you, Karthik. Yes, yeah, we hope that book will release soon, and definitely it will be very much informative for You can start pre-booking. Yeah, you Yes. can. Everyone can start pre-booking it, and I think in about 3 months or 4 months time, we should be able to. They can have the book in their hands. Yeah, we are thinking Yes. that. Yeah. So now I call upon volunteer manager, architect Garima, to share the tank of food. I think Garima is not here. So Radhika, can you share this thing here? Yeah, good evening, everyone. Actually, architect Garima couldn't join because of some network issue. She lives in Uttarakhand. So this is architect Radhika. I'm the program manager for CGPMT. I really thank each one of you. It is like, this event got successful only because of all your audience and our respected speaker over here. And he has given a very good insight about permaculture. Sometimes getting into simple living also is become complicated nowadays because people think it is very difficult, but actually everything is there available in and around. So I would like to thank you have given a very nice insights about that. I feel that this 1 hour session it just went as if like we are just sitting here for 5 minutes because the conversation went so deep. And it was so interesting that everybody just followed up. So thank you so much, sir, for your valuable time, and all our audience and the volunteer team behind this event to make this very successful. And I personally thank even architect Neelam Manjunath ma'am to bring this opportunity, to give this platform to each one of us to know things so to showcase to the world that, there are so many things which is there. We are featuring personalities here, families here who is actually practicing sustainability. So that is the part of Simple Talk. So I thank each one of us who is there listening to this lecture. Thank you so much for joining. And I just wanted to add one more thing here, that we are actually inviting more and more volunteers to CGPMT. We are already more than 15 plus volunteers, and they are actively participating and organizing event. And you can see our post in social media. And we have different projects also connected with CGPMT. So we invite, if you're really interested, if you want to really want to contribute something in the way of simple living or in the sustainable field, please join with us, and you're open to join, and you can see our Insta post for the courses for the different categories. So we have social media handler, copywriter, content creator. So like that, we are appointing one person. So depends upon your interest, you can actually work with us and then contribute. And actually it's a two-way thing, you learn it also and you share your experience here. So thank you so much for each one of you, and for providing your valuable time and energy. You can follow us on Instagram, LinkedIn, Facebook, and YouTube channel. And of course, this video recording also will be sharing in the YouTube. In case if you missed this event, please make sure that you check this YouTube link later on. Thank you so much. Jai Hind. Thank you. Thank you. I would like to thank Mr. Vinay Kumarji and architect Neelam Manjunath ma'am and all other audience for joining the webinar. Thank you, everyone. Thank you, Vinayji. Thank you. Radhika, can we take a group picture Yes, here sure. with everyone's video on?
विपिन जी थोड़ा सबका वीडियो ऑन करके हम एक I request everyone to just keep the video on so that I mean some people have left, but yeah, as many are there. Can we take a screenshot yes, say of cheese. everyone with their videos? Thank you Can so we have much. everyone? Yeah. Put on your videos. Maybe my internet is slightly slow, so I can't see everybody. So possible. Yeah. Okay. Yes, ma'am, I did. Okay. Thank you, Vinay ji. Thank you so much. And we hope to meet soon. Thank you, Definitely. Nutan. Yeah. Thank you, आइए कभी Nisha एक ji, बार. and so many other people. Yeah, definitely. Thank you, एक बार- Neelam ji. And I'm going to tell everybody to buy that book of yeah, yours. tell me. Yeah, thank you so much. Thank you. No, we are planning. I think आपके बिपिन जी ने हमसे कहा है कि एक हम लोग बैम्बू का वर्कशॉप आपके आर्ट ऑफ लिविंग में करेंगे. So जब करना चाहेंगे हम लोग भी बहुत. We are also very keen to do it there at the art of living. That would be great. Okay. Ma'am, you have not sent the, if you don't mind, you have not sent the link for the purchase of the book? Radhika, there was We will share it in the. We have the link, no? We will share it in the Insta. If you can drop an email ID, I will be able to Hello? share it with you, sir. Hello? Sir, if you Yes. can drop your email ID in the chat box, I will share Okay. the link to you. Okay, okay. I And think very soon we'll be we can declaring share it in generally. Insta also. Yeah. Come again? We'll be sharing Instagram it and in Facebook. Insta and Facebook. Okay, okay, right. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Thank everyone. you, Karthik and Radhika and everyone. Yeah. Thank you, Sudhir ji, for joining. Yeah. From School of Public Leadership. I don't know the name is there, but we don't have a face there.